Hello students, Assalamu alaikum. I am uploading this video for those students who haven't attended the lectures, right? We will be taking start of our chapter, that is chapter number 14, respiration. As you can see in this slide that we have the chapters from 14 to 27, as you can see, 14 to 27. So first of all, we will be taking start from respiration. Now, what is respiration? What is the meaning of respiration? Respiration is actually the breathing mechanism, right? हम कहते हैं कि there is a difference between the respiration and breathing. Respiration is not a single step. It is basically a complex type of chemical reaction in which there is the breakage of, or in which there is organic food which is broken down in the presence of oxygen. Here you can see that derived from the Latin word respiratio, which means कि आपके पास respiratio is basically breathing. But हम कहते हैं कि respiration में breathing एक single step है, जैसे inhalation and exhalation. Breathing is also called pulmonary ventilation, in which there is inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Here, respiration is a process of gaseous exchange between air and organism cell, right? हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास लंग के अंदर प्लेस्ड एल्विलाई हैं, जिसको हम कहते हैं कि लंग का क्या है, यूनिट है. different types of cells, when they combine they form an organism. टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है. जिस तरह आप लोग लोअर केसेस में पढ़ते हैं कि जी सेल है, सेल बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स बहुत से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. सो सिमिलरली अगर हम कहें कि लंग का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो दैट इज एल्वोलाई. दिस इज द diagram of an alveoli exchange in the alveolus. As you can see in this diagram, there is an alveoli and here is the blood capillary. तो यहाँ पर क्या है, सेल्स हैं, और ये क्या है, आपके पास एक टिश्यू की एग्जांपल ले लेते हैं हम. तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन आपके एल्वेलाई से आपकी ब्लड की कैपिलरी का पार्ट बनती है, जैसे कि अभी आपने definition में भी पढ़ा कि the gaseous exchange between the air and the organism cell, the sum total of physical and chemical. It is a physical and a chemical process. Physically इसमें ये है कि आपके पास आपके जो lungs हैं उसकी inhalation exhalation की वजह से आपके lungs जो है वो डिफ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, स्ट्रेच होंगे. जैसे कि आप बलून में एयर फिल कर ले तो वो स्ट्रेच हो जाता है. एयर जो है लीव कर ले तो दोबारा से रिकॉइल हो जाता है, राइट. So we are saying it is a complex process in which there is oxidation, right. Importance क्या है कि आपके पास एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, जो कि एनर्जी की फॉर्मेशन होती भी है. एनर्जी जो है वो आपके पास किसके लिए जरूरी है, आपकी मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. लोअर ऑर्गेनिजम्स के केसेस में अगर हम देखें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, लेकिन जो जो हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है. वी हैव एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपके पास क्या है कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है या लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है, तो ये एक्सटर्नली है. इंटरनल जब आपके पास अभी जो जैसे मैंने आपको एल्वोलाई की डायग्राम बताई थी, स्पेशली आपके बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी सेल के बीच में एक्सचेंज हो तो उसको हम इंटरनल कहते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है कि जब सेल जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ऑक्सीजन को टेक इन कर ले और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ दे, ब्रेकेज हो जाए, दैट इज एक्चुअली दी respiration, cellular respiration. Aerobic respiration, anaerobic respiration. Aerobic which is in the presence of oxygen, anaerobic which is in the absence of oxygen. So this point is very important according to the MCQ point of view, and also it is important according to the theory. They usually frame as a question in short MCQ, that in short question answer that कि आपके पास
ये परमिएबल है, इम्परमिएबल है, व्हाट इज द function, what is the property, what is the property of respiratory surface. It should be permeable, it should be thin, it should have large surface area, it should be moist and capillarized मतलब कि ये होता है इसमें कैपिलरी की सप्लाई अच्छी हो, ब्लड सप्लाई अच्छी हो, वेंटिलेशन हो। यानी हम जिस तरह के देख रहे हैं इसमें यहाँ पर ये आपकी हो गई सर्फेक्टेंट की लेयर। सर्फेक्टेंट एक ऐसा हम कह सकते हैं लिक्विड है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपकी एल्वोलाई की इनर वॉल रिलीज करती है ताकि क्या हो, कोलैप्स ना करें आपके एल्वोलाई की जो स्ट्रक्चर है, सरफेस टेंशन मेंटेन रखे। और इसके साथ साथ हम कहते हैं सर्फेक्टेंट यहाँ पर लेसिथिन प्रोड्यूस होता है। अगर एब्सेंस हो लेसिथिन की या सर्फेक्टेंट की, इस ये जो लेयर है आप पर्पल कलर में जो देख रहे हैं, अगर ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ना हो तो एल्वियोलाई जो है वो फूले हुए नहीं होंगे, इन्फ्लेटेड नहीं होंगे, डिफ्लेटेड होंगे, आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। मे बी एक ऐसा चाइल्ड जो कि प्रॉपर सर्फेक्टेंट के साथ बॉन्ड नहीं हुआ, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो और ऑर्गेनिज्म की डेथ पॉसिबल है। इसके बाद आप ये वाली लेयर देख रहे हैं, दिस इज दी स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर, दिस इज दी squamous epithelium of the capillary. So the gases will pass from the squamous epithelial of the alveolus, basement membrane of the alveolus, then basement membrane of the capillary, then endothelial cells. So the gases they pass from the four layer. Number one from the squamous epithelium, number one, number two endothelial of the capillary, number three basement membrane of the both 3 and 4, both of the basement membrane of the alveolus as well as the capillary wall, right? So it should be 1 millimeter or less, 1 millimeter और less। ये जो अभी मैंने 3 layers 4 layers आपको बताई हैं, इनका जो डायमीटर है, इनकी जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो, लेस हो, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपको एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करे, जिसमें नोज आ जाती है, नेजल कैविटीज आ जाती हैं, फेरिंग्स आ जाती हैं, लेरिंग्स आ जाते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। हम एक एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेते हुए चलेंगे, एक एक सिस्टम को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नोज आ जाती है, विच इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि डिपेंड करती है, इसका फीचर जो है डिपेंड करता है इथमॉइड बोन पे और कार्टिलेज पे। हम कहते हैं कि बोन आपकी नोज जो है वो बोनी भी है और कार्टिलेजिनस भी है। अगर डाउन देखें तो इट इज कार्टिलेजिनस, अगर अप देखें तो इट इज बोनी। So here is an example of respiratory system. Here you can see that there are the nasal cavity, we have the external nostrils and internal nostrils, right? And this is the nasal cavity. Here we can see that here are the cells called epithelial cells, and we say that here we have the pseudostratified columnar epithelium, pseudostratified columnar epithelium, right? Then we move towards the pharynx. यहाँ हम pharynx की तरफ आएंगे तो we have the nasopharynx and oropharynx. The pharynx which is connected with the nasal cavity, it is called nasopharynx. The pharynx which is connected with the oral cavity, it is called oropharynx. Then we have the epiglottis. Epiglottis is basically, it is a lid-like structure which is at the top of the glottis. Glottis is actually the larynx, opening of the larynx, ठीक है। So अगर हम forward move करें, so हमने कहा कि it is bony, cartilaginous and it is made of fibrocartilage. Now respiration की आपके पास types क्या आ जाती हैं? Cutaneous, it is from the skin. Bronchial, it is from the gills. And pulmonary, it is from the lungs. Cutaneous respiration fish में देखी गई है, ठीक है, जो स्किन से रेस्पायर करती है। गिल्स में आपके गिल्स में फिशेस आ जाती हैं और पल्मोनरी में ह्यूमन का केस आ जाता है। बोन्स के केस में एथमॉइड है जो कि अनपेयर्ड है, नेजल है जो कि पेयर्ड है। नेजल कैविटीज में आपके पास नॉस्ट्रल्स हैं, नेजल फ्लोर है, नेजल सेप्टम है और हेयर्स हैं, राइट। जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम वी हैव डाउन रीजन व्हिच इज मेड ऑफ कार्टिलेज, lateral cartilages, then we have the bone as you can see in this diagram. These are the sinuses which are present, frontal sinus, then we have the ethmoid sinuses, maxillary sinuses and sphenoid sinuses which is present are here at the side bottom.
Sinuses, they are the paired cavities in the head. They are connected by the narrow channel. The sinuses make thin mucus that drain out of the channel of the nose. This drainage helps to keep the nose clean, free from bacteria, normally filled with air. The sinuses can block and fill with the fluid in case of viral infection. This is the example of skeleton showing the frontal sinuses, ethmoid sinuses, sphenoid, and maxillary sinuses, right? As you can see in this diagram, as you can see in this slide, we have the pharynx. The pharynx is the cone-shaped structure, and it has three parts: oropharynx, laryngopharynx, and nasopharynx. As you can see in this diagram, we have oropharynx, nasopharynx, and laryngopharynx, right? Larynx is actually the voice box. Larynx is very important. Here we have the vocal cords, as you can see in this diagram. Here these are the vocal cords, small folds not used, with the help of which we can produce the sound. This is the structure of a larynx. As you can see, there is a vocal stretch in it. In this diagram, there is also very clear concept of larynx with vocal cords. Here we can see that कि आपके पास यहाँ पर thyroid cartilage है, thyroid cartilage, cricoid cartilage, and tracheal rings. It is the transverse section, anterior view of the of your trachea, larynx. Trachea का थोड़ा सा part है, larynx का ज़्यादा है. Larynx is anterior view and the sagittal view. Here is a glottis, supraglottis, and larynx. Larynx आपके पास एक ऐसा structure है जिसकी जो opening है, lid है, वो epiglottis है, और opening जो है वो glottis है. Trachea एक ऐसा muscular structure है जिसमें C-shaped incomplete cartilaginous rings हैं जो कि 10 to 12 centimeter long है और 16 to 20 cartilaginous rings है. As you can see in this diagram, here we can see कि आपके पास trachea की C-shaped cartilaginous rings के पीछे esophagus है. इसी वजह से ये rings जो हैं C-shaped cartilaginous rings incomplete हैं. ठीक है. ब्रोंकाई आपके पास ट्रेकिया जो है वो बाइफ्रकेट कर जाता है, जैसे कि एसिड में भी है, ये बाइफ्रकेशन इसको कहते हैं, टूट जाना, डिवाइड हो जाना. ये है प्राइमरी और ये है प्राइमरी अगेन. तो अगर आपके पास ये राइट है तो इट इज प्राइमरी, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सिंगल इज कॉल्ड ब्रोंकस. नाउ आपके पास ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी, फिर आ जाता है सेकेंडरी, देन वी हैव द टर्शरी, and then at the end we have the bronchioles, terminal bronchioles, and respiratory bronchioles. At the end we have the respiratory gas exchange, that is alveoli. Alveoli is the little cavity. It is the Latin word which is derived from the word. Actually, it means that little cavity. The wall of the each alveolus is about 0.1 millimeter thick. It is very important to highlight it, right? So in this case, this the epithelium which is lining the alveoli is squamous epithelium. The squamous epithelium is that type of epithelium which is present. अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वो जो फंक्शनल लेयर्स थी और इसके साथ साथ वो लेयर जो 1 मिलीमीटर लेस थी, ये स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाती है. फिर इसके साथ हम देखें यहाँ पे कोलेजन है, इलास्टिक फाइबर है. ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ से हम सेकंड वीडियो ले लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ तक फिर वीडियो जो है वो स्टॉप हो जाएगी, राइट? सो यहाँ तक आप लोग इसको स्टडी कर लें, रीड कर लें. अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ लें. जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट थे ये उनके लिए है, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ लें.